So, hello everybody. In today's video lecture, we'll be going to deep dive into the chapter of kinematics, Sindh textbook board, and class first year. So, in today's video lecture, we'll be having a detailed conversation or discussion on scalars and vectors, along with their graphical representation, resolution, composition, and word problems. So, let's get started. First of all, we'll be reading this paragraph and while explaining you in words. Even a person without a background in physics has a collection of words that can be used to describe moving objects. He's saying that if a person who don't know physics can also describe moving objects, like by using words speeding up, going fast, stop, slowing down, moving, we will be expanding upon this vocabulary list, which such as distance, displacement, speed, and velocity, acceleration. As we will soon see, these words are associated with physical quantities. And now he's saying that these words, the word going, fast, stopping, stop, slowing, are replaced or will be replaced by distance, displacement, speed, velocity, and etc. in this video lecture. And after that, we'll be having a clear understanding of the relationship between distance, displacement, speed, velocity, and acceleration and physical quantities. The physical quantities that are used to describe the motion of the object can be divided into two categories. Physical quantities. Yeah, okay. And like we need to understand this. For that, I have also made some lectures. So let's get started. So I hope you all are able to see that. So you know that here he said that these are quantities. A quantity is something to measure, okay, that can be measured. A quantity consists of two things, a unit and a magnitude. A unit and a magnitude are the further parts of the quantity. A quantity depends on a unit and a number or magnitude, on a number. So whatever a quantity is, which can be said that it will have a unit and it will have a number. But most probably, it's not always true that the quantities also have unit. Because some of the quantities, there are two types of quantities, which are like some of the quantities cannot be measured and some can be measured. So first of all, let's discuss the cannot be measured. The cannot be measured quantities can be non-physical quantities, which we cannot see, touch, or we can only feel them, like love, like sadness, like happiness. These are quantities. We can say them quantities, okay, but they cannot be measured. Love can't be cannot be measured, and likewise other stuff too. So those non-physical quantities that cannot be measured are non-physical, like non-physical quantities which cannot be measured. Non-physical cannot be measured. Just you need to just remember this. It's tough. And now coming toward the second type, which is can be measured. The can be measured type is a physical quantity. Like physical quantities which can be measured are called physical quantity. Like quantities that can be measured are called physical quantity. And we have further more types of physical quantity, but I need to make you understand physical quantities very clearly. So let me open my Google Chrome and let's have a discussion on that. When like physical quantities further have two types, which are scalar and vector. So I hope you would have understand that quantity have two types, physical and non-physical. Physical has further two types, but non-physical does not possess any kinds. Okay, understanding physical quantities.
In this video lecture or this lecture or in kinematics or in physics, you can say, we are concerned with physical quantities. Physical quantity, as the name suggests, that physical quantities which are used in physical world. Okay, those quantities can also be determined or termed as physical quantities. Can be expressed as a value. A physical value quantity can be expressed as a value, which is the algebraic multiplication of a numerical value and a unit. So what happens, as I told you, that quantities have unit and number, which means magnitude, but not all quantities possess magnitude, because some are non-physical quantities which cannot be measured, so they don't have magnitude. They cannot be measured, and these are called non-physical quantities. But physical quantities can be measured. They have a unit, they have a number, and these are termed as physical quantities. Physical quantities is further divided into two types: scalar and vectors. As you know, we live in a multi-dimensional world, and now, like in the world, we consider three-dimensional spaces, like the space is of three dimension. So here, whenever we're talking about a single dimensional quantity or a quantity which does not possess any direction, we can refer to that as scalar. So scalars are single dimensional and don't have a particular direction. But talking about vectors, so what vectors are? You can see, sorry, vectors. Vectors are like this. Oh, sorry, I made so mistakes. For example, it's point A, point B. A particular distance in the direction. Any particular distance in direction is called a vector. A vector possesses direction as well as magnitude. Okay, a vector possesses direction as well as magnitude, but a scalar only has a magnitude, which is a certain unit, and certain number and unit is equals to magnitude. No particular direction, but certain number and unit, which means certain magnitude and particular direction. This is the difference or the basic difference between scalar and vector. Let me give you a brief or sum up of this scalars and vectors. A quantity which is only magnitude but no direction is called a scalar. For example, mass, density, volume, length, time, temperature, speed, and any real number. Say pi, 2, or etc. The value of a scalar is a single real number with an appropriate unit of measurement, such as centimeter, foot cube, or degree, or second, or anything. Okay, and the scalar operations are same as algebraic operations. In this, the definition that I read over here, which told that it is a only certain number which is a numerical number, okay, or a real number. It cannot be a complex number, but it is a real number. Any real number like pi, like under root 2, you will say it's a real number. Under root 2 is a real number, and with a unit, any unit, like it can be pi meter or I'm just taking it can be 3.427 meter of anything, or under root 2 meter of anything, under root 2 area or centimeter cube of volume of something, that with a unit makes a scalar quantity. They follow the simple rules of algebraic, what do you say, of elementary algebra. They follow the same rules of elementary algebra or algebraic operations. Okay, this can be like we have 2 meters and we have 3 meters again, and we have a 2 meter. For example, we have a 2 meter of cloth, which is in blue color, and we have a 3 meter of cloth which is in which is in black color. Now we want the sum of this quantity. So we can say that we have a total of 4 plus 2, which means 6 meter of cloth altogether, including blue and black. This is a simple thing. As simple as that. Now, here we are going to see some of the quantities which are scalar. The quantity or the length.
length can be anything of measure, like measuring distance from here to here, or measuring the length of the cloth, measuring the length of the cloth, measuring the length of block, measuring the length of the object. Any length of any particular object is length, which is measured in meter. It does not mean that it should have a direction. It can be directionless, the length can be directionless, the length does not need to have a particular direction because we can take it anywhere. We can change the direction of a piece of cloth, we can change the direction of the distance and everything as length. Mass. Any mass or the any quantity of matter of an object is termed as mass. A mass is not a vector quantity because it is not directional. Okay, if you have a mass of 2 kg on earth, you will have the same 2 kg of mass on the moon. Time is a universal quantity, which means it never changes. Likewise mass, the time does not changes. The time keeps going with, like, in universe, so in the whole universe, or in the world. We can't talk about universe, but in universe it is also a very, we can say, independent quantity, and time always moves. It does not depend on anything, no direction, no anything. So that's why time is a scalar quantity. Electric current, we don't take electric current as a vector quantity, but we do take it as tensor quantity. But here we'll be discussing it as a scalar quantity. Okay. Thermotemperature, which is the temperature of anything. Temperature of anything does not need to be directional, nor the current needs to be. So that's why they are taken as scalar. Energy of a substance is never ever directional. The energy of a substance can be anything, but it does not need to have a direction. Likewise charge, likewise light is air, also a unit of length. Wavelength is also a unit of length. We can say frequency is the unit of cycles covered per unit time. So it depends on time. So it does not mean that it means that it is not a vector quantity. Electric flux, entropy, pressure does not needs to be a directional, and not the density is. Some tensor quantities we will discuss over here. Tensor are like maybe scalars and maybe vector. Means sometimes they behave as a scalar and sometimes they behave as vectors as per their wish. Electric current, temperature, and pressure are 3 of them. Okay. I hope you would have understand, or I would have a better understanding of this chapter. Now we'll move further to the vector quantities, which will be, I don't have written much over here, but I'll be using this book to make you understand about the vector quantities. So vector quantities are those which have both magnitude and direction, which I have made you understand. What are they? They have magnitude, have direction with a proper unit. Means magnitude के अंदर क्या क्या आता है? Number और unit. यहाँ पे अब like I think there was no need to write this, but they have written it. तो magnitude के अंदर क्या आता है? Unit भी आता है और number भी आता है. You can search the मिकदार. Magnitude का मतलब ही मिकदार होता है, okay? And direction, okay? Direction means वो हमेशा direction move करेगा, and they follow the vector algebra. There is a kind of algebra or a type of algebra which is specifically used for vector quantities without mentioning its direction. Oh, sorry, which is basically for vector quantities is known as vector algebra. Okay, it follows that principle. We cannot specify a vector quantity without mentioning its direction. Yeah, it can never be. Like displacement, velocity, acceleration, force, momentum. We know that force is always in direction. Whenever we hit a mass, or sorry, apply force on a mass, it's always directional. Okay, momentum the possessed by a velocity and mass, or an object which have velocity the vector quantity, which means it also makes a vector distance. It is a cross product of velocity and mass, and it makes a vector quantity.
A representation of vector can be in two ways. It is an analytical or symbolic representation, which means likewise we write over here a vector with representing its direction over here with the arrow, or writing it like this is a representation. But we have other directions too, other representations too, which one is a graphical representation. A graphical representation is done on a graph or on a graph when we have to show that we're show or properly make a diagram of a vector, because vector positive direction, in that we show the direction as well as the magnitude, and by considering these both direction and magnitude, we make a graphical representation of that vector. That is the graphical representation. Likewise, we have here, you can think that of as a graph, and on this graph we have represented, or for example, have a vector of 2 meter, okay, 2 meter in east, in northeast. Up in northeast, and first of all we need to see कि northeast कहाँ पे, northeast is definitely over here, okay. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर। तो हमने स्केल लिया, हमने भले यूनिट बनाया, स्केल बनाया, अब जैसे भी ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करें तो उसमें हमने 2 मीटर की लाइन लगाई जो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो क्या बन गया वो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दिस इज इट, ओके। अब now we'll be understanding addition of two vectors and why is it commutative, associative, loss, and furthermore. So now actually I'm recording it sometime after that video. So we discussed about scalars, vectors, and we know that the scalars are added, subtracted, divided, multiplied by arithmetic operations. That means we don't need to learn it. But vectors, in the case of vectors, it's not the same. They're added, subtracted, divided, and multiplied by vector operations. Okay, so we cannot take the same, and we need to learn the addition of vector and subtraction of vector. So here I have the book. Firstly, we'll be reading from the book, and then we'll be going. Addition of vector is, we use a method, a head to tail method, or a graphical method. We call it head to tail method for addition of vectors. That is the head to tail method. Can we say, you can understand that we have to connect the head to the tail. What we have to do over here, we have to connect the head to the tail of the other vector. So you can basically have a simple principle of this, that first, the head of first vector with the tail of second vector, and with the head of second vector with the tail of third vector, as it will be going like the head of first vector to the tail of second, the head of second to the tail of third, the tail of third to the head of third to the tail of fourth. But in the resultant vector, the tail of the first vector to the head of the last vector, like the tail to tail and head to head. What happens over here? First of all, for example, we have a vector A of 2. Okay, we have a vector A of 2 meter towards east. Okay, towards east. So we draw it on the graph like this. Okay, 2 meters towards east. And then we have a second vector, 2 meter towards north. Okay, towards north. So what we'll be doing? Okay, we'll be towards northeast. Sorry, northeast. Here it is, northeast. So we'll be taking it as northeast. North की तरफ होता, so its direction would be like this. उसकी direction इस तरह से होती है, but that direction is not like this, which means कि उसकी direction northeast में, तो 2 मीटर northeast की तरफ ड्रॉ किया। अब now हमने क्या नाम है, इनको प्लस करना था, तो हमने प्लस करने के लिए क्या किया, पहले A ड्रॉ किया,
फिर बी ड्रॉ किया, फिर हमने बी क्या किया, बी ड्रॉ किया, और हमने जब बी और ड्रॉ कर लिया तो हमें जब रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा सी की सूरत में या फिर आर की सूरत में, दैट विल बी व्हेन वी विल जॉइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। क्या करेंगे, अब जो जो हमें वेक्टर मिल गए थे उनके ऊपर उनकी जो टेल की टेल और हेड के हेड से ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, and in the addition of vector the magnitude is always increased and the direction remains same. अब how am I saying this? देखें, यहाँ से जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, ठीक है, जो हमें तीसरा वेक्टर मिला, हमने ये पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइपोटेन्यूज का ज्यादा होगा, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन सेम रही, नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई डायरेक्शन, क्योंकि आखिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया तो वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई। तो समझ में आ गई ये बात आपको? सो दैट लाइक, और मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो ये बनता है ओबी, ओबी जो लाइन है, ठीक है, ये और रिजल्टेंट वेक्टर की जो लाइन है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, इसके और इसके सम के इक्वल है, ठीक है, जो कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस वाज एज इजी एज दैट। Now discussing the properties. One more thing that I want to know you people is that vector of the addition of vector obeys commutative law. First of all, we should understand this. Direction and magnitude remain same after arithmetic operation on vector. ठीक है, क्या होता है, magnitude और direction होता है arithmetic operation के बाद same रहता है, arithmetic operation, समझे बात। लेकिन direction of resultant vector when head of last vector, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड क्या होती है, लास्ट वेक्टर। कहाँ पहुंची, डायरेक्शन क्या हुई, लास्ट वेक्टर की तरफ पहुंची। बात समझ में आ गई है आप लोगों को कि इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द last vector, which means the direction remains same and the magnitude increases, but it's talking about over arithmetic operation, so don't get confused. Now we will be understanding about the subtraction of vector. The magnitude same and direction is changed. What happens we have to subtract a vector. For example, we are subtracting a vector which is b. We have to change the negative of this vector b, and we want to minus b or a minus b. Like we have a vector of b, and now we just only change the direction and draw the magnitude vector in the opposite direction. Like the डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो माइनस वाले का होगा और जो ए का होगा वो सेम ही रहेगा। ए से यहाँ तक इसका बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, बट ये अगर पॉजिटिव में होगा तो ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, अगर ये फर्स्ट में होगा तो ये थर्ड में होगा, ये सेकंड में होगा तो ये फोर्थ में होगा। इस तरह से हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है वेक्टर, ये एक वेक्टर से 2 सेंटीमीटर का ले लें आप इस वेक्टर को, सॉरी रिजल्टेंट है ये, पहले एक वेक्टर ले लें ए, और जो बी है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, लेकिन बी वेक्टर ये होता है, लेकिन हम जब इसका माइनस लेंगे तो माइनस भी हमारे पास ये बनेगा जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस भी ले दिया, माइनस भी लिख दिया, हालांकि माइनस बी वहां जाना था लेकिन हमने माइनस भी लेना था तो हमने इधर किया उसको, ठीक है। पहले ही आप जो नेगेटिव लेना है ना आपने उसको ड्रॉ करके देख लें, सो दैट विल बी इजी। तो यहाँ पे माइनस भी कर दिया, माइनस भी करके फिर यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बना वो क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर। बट अगर इसको हम एडिशन करते तो क्या बनता, ए यहाँ जाता, बी यहाँ जाता, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो यहाँ बनता। डिफरेंस ये है इसके अंदर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर, लाइक अगर 2 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो वेक्टर है उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है, 3 से, स्केलर से, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है और डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर का वेक्टर है जिसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, समझो उसको 2 बार हो गया, वो हम ये कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 3 2 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि देखें ये 3 सेंटीमीटर वेक्टर इसको हमने 2 सेंटीमीटर से रिप्लाई हुआ गया, तो ये क्या बन गया, mn बन गया, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, दैट इज द थिंग, ओके। we'll understand about the addition of factor, commutative law कैसे ओबे करती है। this is simple, very simple, just need to understand कि पहले आपने क्या करना है, एक कोई भी ग्राफ लेंगे आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस ग्राफ ओवर हियर, ओके, हमने ये ग्राफ लिया जो कि ओरिजिन है इसका, ओके, ये ओरिजिन है, सो सॉरी फॉर माय लाइन, let me draw for it.
भले वो ओरिजिन पे नहीं है, बट है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। कंसिडर एज ओरिजिन, यही ओरिजिन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर लिया 2 सेंटीमीटर का, जो कि ए है, किसका है, कितने का है, मीटर का। कितना लिया हमने, 2 मीटर का। और जो हमने बी लिया वो कितना लिया, 2 मीटर का। अब हम ए प्लस बी को, जो ए प्लस बी है उसको इक्वल करेंगे बी, बी प्लस ए के। किस तरह से करेंगे, अब देखें। ए वेक्टर है 2 मीटर टूवर्ड्स ई, और जो ये है वो है 20 मीटर है, वो है टूवर्ड्स एन ई, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ले सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ए वेक्टर है, ओके, बी वेक्टर है, सॉरी। हाँ, बी क्या है, हमने पहले बी लिया है, वहां पे उन्होंने पहले ए लिया, बी लिया, आप जो भी ले लेंगे, मैं पहले बी वाला एक्सप्लेन करेंगे। तो बी भी क्या है, बी जो है वो टुवर्ड्स ई जा रहा है, सॉरी। तो बी क्या हो रहा है, टुवर्ड्स ई जा रहा है यहाँ पे। बी यहाँ पे 2 मीटर और ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, होगा। अब फिर ए जो हमें इसके अंदर प्लस करना है, उसको हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स ई जो है वो ऐड कर देंगे। टुवर्ड्स ई हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम 2 मीटर बना देंगे। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर का हमें पता है, वो पहले की जो क्या नाम है, टेल होगी, और जो लास्ट की जो हेड होगी उससे अटैच होगा। तो वो क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू बी। अब इस तरह हम करके देखेंगे, जो हमने बी प्लस ए किया है, अब हम लोग करके देखेंगे ए प्लस बी। पहले हम ए ड्रॉ करेंगे, ए कहाँ बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। तो हम ए को लेके चले गए ईस्ट की तरफ, ठीक है। सॉरी, अब मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी सॉरी सो सॉरी, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये ईस्ट की तरफ है और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलती की है, अभी या तो मुझे नाम चेंज करने पड़ेंगे या फिर मुझे, तो ये क्या हुआ, इसको हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके गए इस तरह से। और मैंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंचे, तो हमने जो बी वाला है उसको हमने क्या किया, सॉरी ए, हाँ, उसको हमने ईस्ट की तरफ घुमा दिया। जब ईस्ट की तरफ घुमा तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, यहाँ की जो पहले की दोन, और पहले की टेल, और लास्ट का हेड, तो बन गया सेम दोनों का। उसका भी रिजल्टेंट वेक्टर ये बनना था, इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर ये बना। तो दैट मीन्स कि इट ओबेस कंप्लीटेड लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ इज एज सेम एज दिस, यही होता है उसके अंदर भी। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी करना होता है, या फिर बी प्लस ए, इस बिग ब्रैकेट के अंदर ही होता है ना, कि आप पहले ए प्लस बी करो उसके बाद सी प्लस करो, या फिर आप पहले बी प्लस सी करो उसके बाद ए प्लस करो। तो पहले आप ए और बी का चलो कर लो, पहले ए और बी को प्लस किया, तो ये क्या नाम है, ये बन गया। वो ए प्लस को बी प्लस किया, फिर उसके अंदर हमने सी प्लस किया। जब सी ऐड किया तो सी की ये डायरेक्शन थी, तो यहाँ आ गया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो क्या बना, पहले की उससे लेके लास्ट की टेल तक। बट जब हम दूसरा वेक्टर देखेंगे तो वो क्या होगा, हम दूसरा वेक्टर देखते हैं, वो क्या था कि हमारे पास, हमने पहले क्या प्लस किया, बी को सी से प्लस किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो बी से सी प्लस हुआ, बी प्लस सी हुआ। अब फिर उनमें ए प्लस हुआ, ठीक है, ए का प्लस कर दिया यहाँ से। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, यही आया रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो क्या हुआ, इसके इक्वल हो गए। अब समझे बात को आप लोग, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना, दोनों का सेम आया, क्योंकि हमने ए को प्लस किया, पहले ए प्लस किया, फिर बी प्लस किया, फिर सी प्लस किया, तो डेफिनेटली पहले की, पहले का जो है का वो टेल होगी, और दूसरे का, तीसरे का हेड होगा। यहाँ हेड उन्होंने बनाया हुआ नहीं, बट सी का हेड यही आ रहा है। इसी तरह से पहले आप बी बना लो, सी बना लो, लेकिन हमें ए को वहीं लेके जाना पड़ेगा। दैट्स ट्रू, क्योंकि ए की जो क्या नाम है, जो वो होगा वो इसी तरह बनेगा। और आप अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप इसको लिखा जाएंगे और फिर वो बन जाएगा। दैट्स ऑल, ओके। यहाँ पे भी यही मैथमेटिकली लिखा हुआ है, हमें पता है सारा मैथमेटिकली, आई थिंक। अब नाउ द मैग्नीट्यूड। अब जो मैग्नीट्यूड होता है ना एक वेक्टर का, इज यूज्ड बाय, इज लाइक गेन्ड बाय यूजिंग, या इट्स मेड, और इट्स
It's calculated by using Pythagoras theorem. हम Pythagoras theorem यूज करते हैं because almost in terms of factors हम दो ये प्लेन की बात कर रहे होते हैं, मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन. जो Pythagoras theorem है वो भी हम x और y की डायरेक्शन ही लेते हैं. तो इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज है कि देखें, whenever हम कोई फोर्स देता है हम उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, x और y. ठीक है, एक कंपोनेंट को हम वर्टिकल लेते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. इसीलिए इसको हम रिलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था? सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज जो होती है उसका क्या इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो इस तरह से हम ओसी को स्क्वायर जो है ओबी है हमारे पास, सॉरी ओबी को पुट कर देंगे स्क्वायर में, फिर बीसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर. तो हम देख सकते हैं कि जो ओसी स्क्वायर है वो उसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, मैंने यहाँ पुट कर दिया, और बीसी जो है वो ए वाई के इक्वल है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किसके इक्वल बनती है? ए स्क्वायर के. जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगी. कोई भी जब किसी भी हमें चीज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हमें पता चल गया है कि हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला. आई होप अंडरस्टैंड आ गई होगी. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझा चुकी हूँ, डिवीजन नहीं समझाई, मैं डिवीजन भी समझा देती हूँ. अब नाउ we need to understand Cartesian coordinate system, और उसके बाद types of vector, object resolution, composition and everything.